Prime Minister Narendra Modi, who reached Sydney this morning, addressed the Indian community amid loud cheers and applause at Alphonse Arena. More than 16,000 members of the Indian diaspora packed Alphonse Arena at Olympic Park to salute Modi at a community reception. Cultural performances and Indian songs welcomed Modi to the stage, where he spoke of India's greatness and friendship with Australia. PM Modi, who is the first Indian Prime Minister to visit Australia in 28 years after Rajiv Gandhi, said such a thing will not be repeated in future and even Australians are always welcome to India. The PM also promised visa on arrival to Australians. The 1,250 billions of the countrymen. आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं. You leave India at night लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 28 साल लगे. But the Prime Minister of India took 28 years in coming here. मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं. I have come here to assure you, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, my dear countrymen living in Australia, कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा. you will never have to wait for 28 years. जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है. The right that Amid stirring screams of joy and chants of Modi, Modi, the PM said India has a lot to learn from Australia. He added, India needs to learn that no work is big or small in stature, but what is important is the spirit with which a person works. He was born in Jabalpur and in Olympic. हॉकी को रिप्रेजेंट किया. He represented hockey from the side of Australia. Red Sellers, Stuart Clark. ये दोनों एंग्लो इंडियन. They both were Anglo-Indian. They came from India. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को But क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपनी जगह बना दी थी. but उनका योगदान. they established Australia in the world of cricket. लीसा स्थालेकर Lisa पुणे Sthalekar में जन्मी was born in Pune. और महिलाओं के क्रिकेट की दुनिया में And in the field of ladies cricket, up to 2013, she made the record of 1,000 runs, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से and she took 200 wickets. And she was the daughter of Mother India. अक्षय Venkatesh, भारतीय मूल के he was originally from 12 India. साल की उम्र में At the age of 12 years, इंटरनेशनल फिजिक्स he ओलंपियाड international physics in Olympiad and in international math Olympiad. डंका बजा दिया. PM Modi, who received a rousing welcome among Indian community in Australia, said the friendship between the two nations will only get stronger from now as the nations share a lot in common. Please welcome Uncle Alan from the Aboriginal community. इस बात को गर्व देना चाहता हूं, ये गौरव देना चाहता हूं कि सफाई करना, ये कूड़ा कचरा उठाना, ये बिलो डिग्निटी नहीं है, ये बहुत इज्जत वाला काम है. और हम भारत में हम लोगों का स्वभाव क्या हो गया है? अगर कोई अपने घर कूड़ा कचरा उठाने के लिए आ जाए तो हम क्या कहते हैं? कचरा वाला आया है. हकीकत वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है. लेकिन हमारे सोचने के तरीके में ऐसी गड़बड़ हो गई है, हमारी टर्मिनोलॉजी इतनी बदल गई है, को जो सचमुच में सफाई का काम करता है उसको भी हम कचरे वाला कहते हैं. ये स्थिति बदलनी है. Powered by NNIS.